Hello everyone, this is Vipul Purohit and I welcome you all to my YouTube channel. My dear friends, as you can see, the title of this particular video, we are going to discuss about comparative chemistry of transition metals. I have already posted 4 videos prior to this in the form of part 1, part 2, part 3 as well as part 4, and now we begin with part 5. Yes, my dear friends. Part 5 here, we are going to talk about the property which is related to transition metals, and that's one of the most important property, and that is color. Okay, it is what? Color. Now, to begin with, before I explain you about how does the transition metals exhibit color, first of all is, I want to give you the introduction regarding the origin of color. Okay, so the first point that you need to remember is the most important, the most responsible factor for exhibiting color is that any substance having an ability to absorb radiations. Okay, it's absorbing what? Radiations. Obviously, when I talk about radiation, so it's energy. So, substance having an ability to absorb radiations from the visible region of the electromagnetic spectrum, which we call it as EMS. Okay? And I underline this, visible region. Now, दोस्तों, बहुत लोग के दिमाग में ऐसा रहेगा visible region ही क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा electromagnetic spectrum is composed of various regions. Okay, UV, ultraviolet, infrared, X-rays, gamma rays, visible. तो ये सब visible के ऊपर क्यों इतना concentrate कर रहा? The reason is very simple, my dear friends. और वो ये है कि हम फिलहाल कलर के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और विजिबल रीजन की खासियत ये है कि ये सिर्फ एकमात्र ऐसा कलर्ड रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. It's the only colored region of the electromagnetic spectrum. Alright? So, this is what is the speciality of this particular region. It's the only colored region. तो जाहिर सी बात है, जब absorption visible region से होगा, तो color दिखाएगा. Now, next thing is, ये हो गया point number 1. Okay? That the first requirement is having an ability to absorb radiation from visible region. Next criteria is, next requirement क्या है? In what conditions will a substance absorb radiation from visible region? ये सारे जो regions के मेरे बारे में बात की थी मैंने, UV, माइक्रोवेव, IR, X-rays, gamma rays, वो सब को छोड़ के वो visible region से ही क्यों absorb करेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं. ना देखिए दोस्तों, this electromagnetic spectrum is based on various wavelengths. Wavelength is related to energy. Okay, एक सिंपल एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूं, एंड दैट एक्सप्रेशन इज E is equal to hc upon lambda. ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है जो एनर्जी और वेवलेंथ को कनेक्ट करता है. H is a Planck's constant, C is the velocity of light. So these two parameters are constant. So it's very clear now that energy and wavelength, they are inversely proportional. Okay, so every region is based on wavelength. Okay, so wavelength changes, the energy will change. Okay, it's as simple as that. Okay, अब यहाँ पर हम जो radiations की बात कर रहे हैं तो obviously हम energy के बारे में बात कर रहे हैं. Okay, so अभी हम जब visible region की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, every region corresponds to a particular wavelength. So when I talk about a visible region, which is the only colored region, I will say that the wavelength ranges in 400 to 800 nanometer. ये उसका range है. Okay, you can see this. It's not a single wavelength. It's a range of wavelength. और इसलिए तो आप जानते हो कि there are variety of colors. You don't have only one single color. That's it. It's variety of colors because there is going to be a range of wavelength. Okay, 400 to 800 nanometers. Is 400 to 800 nanometers में there are some primary colors which are going to be represented as Vibgyor. ये आपने सुना होगा पहले भी. Okay, so from a range of 400 to 800 nanometers, these are what the colors are. So it means every color
corresponds to a particular wavelength. Okay, आप देख सकते हो अभी क्या क्या सीक्वेंस है. Okay, every color corresponds to a particular wavelength. Wavelength is related to energy. यानी अगर एनर्जी चेंज हुआ तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर चेंज होगा. Okay, so these are the 7 colors that we are going to talk about. Okay, तो ये था about the origin of the color which I'm talking about. अब next point is हम इसे अभी लिंक करेंगे with transition metals. अब transition metals तो दोस्तों आपको पता है कि उसका most important criteria is what? कि those metals which have incompletely filled d orbital. Okay, the transition metals will have what? Incompletely filled d orbital. So because of that, how it can be related to color, that I'm going to explain you now, and that is TM. I use the shortcut transition metals, a short form, and that is having incompletely filled d orbitals. Let us consider, say, the first transition elements. Okay, so the characteristic orbitals, you all know it, it's 3d and 4s. So if I'm going to show a 3d orbital and I'm going to show a 4s orbital. Okay, now if I'm having a 3d orbital in this way, right, where the 3d orbital is completely filled. Now I'm talking about a substance having an ability to absorb radiations. The radiation is what? Energy. Why do we require energy? To do some work. So here, which work am I talking about? कौन से काम का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसके वजह से एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी चाहिए और जब वो एब्जॉर्ब होता है विजिबल रीजन से तो फिर कलर की बात आती है. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि which work am I referring to for getting energy, for requirement of energy, and my dear friends, and that is about electronic transitions. Okay, we are carrying out what? Electronic transitions. उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. नाउ दैट डिपेंड्स. It can be from one orbital to another orbital, that is within the same orbital, or it can be from one particular shell to another shell. Okay, one orbital to another, so different orbital, that is say S to D, yeah, D to P, etc., which may involve different shells. Okay, so that is what is called as electronic transition. और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ विजिबल रीजन से तो वो सब्सटेंस कलर दिखाएगा. आई बात समझ में? ओके, दिस इज व्हाट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस. ओके, नाउ कंसीडर दिस केस. द 3d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली filled. Okay, I've already given you the condition for a transition metal is incompletely filled d orbital. Then obviously this is not a transition metal. And if I want to carry out an electronic transition over here in this particular case, then I got only one option, and that is what? I bring about an electron from 3d to 4s. It involves differentials. Okay, differential, it obviously it will require more amount of energy. Okay, and if it requires more amount of energy, then obviously the absorption cannot take place from the visible region. Alright, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ 400 to 800 nanometers is considered to be a comparatively higher value, and therefore we say the energy required will be what? Less. क्योंकि energy and wavelength are inversely proportional. Okay, तो जहाँ पर energy हमें कम चाहिए for electronic transition, वहाँ पर chances ज़्यादा है. Okay, absorption करने का कहाँ से? Visible region से. And therefore we say that it is going to be what? Colored. लेकिन यहाँ पर तो it is involving different shells, so more energy is required, and therefore absorption cannot take place from the visible region. और अगर absorption नहीं होता है visible region से तो obviously that particular substance is colorless. Okay? अभी मैं आपको एक दूसरा category बताता हूँ, and that is 3d and 4s once again, and I'm going to change the arrangement of the electrons. Suppose I'm going to show this way. Okay, अब ये incompletely filled d orbital है, d9 configuration है. Okay, so now in this particular case, if I want to carry out the electronic transition, there is a possibility that this electron can go from here to here. Because यहाँ पे there is vacancy. Not necessary. I don't have only one option that the 3d electron has to go to the 4s orbital, which was the case in the first one. Okay,
इन द सेकेंड केस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो इलेक्ट्रॉन 3d से 4s में जा सकता है, या तो ये विद इन द सेम 3d ऑर्बिटल जा सकता है, बिकॉज देयर इज अ वैकेंसी विद इन द 3d ऑर्बिटल, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, एंड दैट इज व्हाट इज मार्किंग द ट्रांजिशन मेटल. यानी ट्रांजिशन मेटल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस विद इन द सेम d ऑर्बिटल. ओके, और अगर आप एनर्जी का कंपैरिजन करोगे तो आई गेस इट्स वेरी सिंपल, एंड दैट इज विद इन द सेम d ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना है तो ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, okay, and therefore it can be obtained from what? In this particular wavelength region, and this is which? Visible, and visible means what? Color. Okay, ये sequence है दोस्तों. Okay, and therefore we say that the transition metal have an ability to exhibit color. इस टाइप ऑफ ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं हम? ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ पे दिखाया है, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सो विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग? d orbital electron is moving, and it is going into which orbital? d orbital. d ऑर्बिटल से निकल के वो d ऑर्बिटल में जा रहा है, एंड देयरफॉर दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज अ dd ट्रांजिशन. सो ये पहला पॉइंट है दोस्तों, द dd ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर as far as the transition metal is concerned, because it requires less amount of energy. Okay, so I hope you have understood up to this part, so please have a look at it. All right, now the next thing is I will explain this concept with the help of an example. Okay, अब मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं वो है द ट्रांजिशन मेटल विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल लिगैंड के साथ जुड़ जाता है. लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, okay, and the metal ion are electron acceptors. Okay, so यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं TiH2O 6 3+. ठीक है, ये एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अब यहां पर क्या हो जाता है कि water is going to behave as a ligand. It's an electron donor. Okay, and titanium is going to be in the +3 state क्योंकि water is neutral. अभी टिटेनियम के केस में एटॉमिक नंबर 22 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d2 4s2. सो टिटेनियम इन द +3 स्टेट 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s, 3d में से एक इलेक्ट्रॉन, सो इट इज 3d1. ओके, अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि व्हेन द लिगैंड्स आर गोइंग टू अप्रोच द मेटल ऑर्बिटल्स, तो मेटल के d ऑर्बिटल्स नाउ विल लूज द डीजेनरेसी. डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. ये नहीं होगा क्योंकि क्या होगा? रिपल्शंस होगा. ओके, सो इस रिपल्शंस की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड्स, दोस्तों याद रखिएगा, ओके, एज लॉन्ग एज द लिगैंड इज नॉट अप्रोचिंग नथिंग हैपेंस, द ऑल द d ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी. बट व्हेन द लिगैंड्स आर अप्रोचिंग द मेटल, okay, then there is going to be what? Repulsions taking place between the two, and because of this repulsions what will happen is there is inequality, क्योंकि all the ligands are not equidistant with respect to the metal d orbitals. ओके, और इसकी वजह से अनइक्वालिटी आती है, और अनइक्वालिटी आएगी तो एनर्जी में भी अनइक्वालिटी आएगी और डीजेनरेसी खो देगा. सो d ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू स्प्लिट अप इनटू 2 लेवल्स. ओके, वो 2 लेवल में स्प्लिट अप हो जाएगा. तो और मैं आपको बता देता हूं वो कैसे होगा. तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी. तो शुरुआत में मेरे पास ये 5 d ऑर्बिटल्स है इस तरीके से. ओके, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स है, लेकिन जैसे ही लिगैंड आ गया तो व्हाट वी से इज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉस इन डीजेनरेसी. तो 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा. व्हेन आई टॉक अबाउट अ 6 ligand मतलब इट्स अ ऑक्टाहेड्रल फील्ड. Okay, 6 ligands result in what? Octahedral field. So this is in presence of ligand. Okay, this is what? In presence of ligand. This is in absence of ligand, where there is going to be what? Degeneracy. Okay, now the degeneracy is lost. There is a splitting taking place of the d orbitals, which we also call it as delta O. Okay, now in this situation what will happen is मेरे पास d1 है तो obviously it is going to occupy the lower d orbital.
ओके हम ज्यादा डिटेल में नहीं चाह रहे कि ये कौन से डी ऑर्बिटल्स है. ओके दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस दैट यू लर्न इन डिटेल इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री व्हेन यू कम टू योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. सो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आउट ऑफ द 5 3 of them are on the lower side, 2 of them on the upper side. लेकिन एक बात याद रखिएगा, it is only for a octahedral field. ओके ये तीनों को collectively is called as a T2G orbital. ये दो को collectively is called as EG. T2G, G मतलब क्या? Girate, symmetrical. ओके octahedral geometry कुछ इस प्रकार का है कि I can cut it into 2 equal half. So it is symmetrical. So it is Girate. And the other thing is T stands for triply degenerate and E stands for doubly degenerate. तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी लेवल सेम है, सो आई कॉल इट एज E. यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है जिसका एनर्जी लेवल इज सेम, सो आई कॉल इट एज T. ओके एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला है. आई एम नॉट गोइंग टू गो मच मोर इन डिटेल एज फार एज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कंसर्न्ड. ओके सो अब क्या होगा, मैं इसको एनर्जी देता हूँ. ओके आई गिव एनर्जी which is equivalent to a wavelength of 500 nanometer. ओके मैं वापस से बोलता हूं, मैं एनर्जी सप्लाई करता हूं which is equivalent to a wavelength of 500 nanometer. और जैसे मैंने बोला था विजिबल रीजन का रेंज है 400 to 800 nanometer, so it is in this particular range. So as a result of which now what happens is the electron which is going to be in the lower side will go onto the higher EG orbital. इस तरीके से. So this is what is the electronic transition taking place from the T2G to the EG orbital. लेकिन let me be very clear, T2G is a d orbital, EG is also a d orbital, and therefore this transition is called as what? Oh yes, you got it right. This is called as dd transition. आई बात समझ में? Okay, this is called as what? A dd transition. And therefore we say the color of this TiH2O6 3+ is going to be what? Purple in color. ओके इट इज व्हाट? पर्पल इन कलर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जहां तक कलर का सवाल है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर, द कलर विच इज एब्सॉर्ब एंड द कलर विच इज ट्रांसमिटेड. हमें जो अपनी आंखों से दिखता है ना कलर, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिटेड कलर. Alright? Now the absorbed color I cannot see from my visible eyes. Okay, naked eye से नहीं देख सकता हूं मैं. I need to make use of an instrument, then only I can come to know that which is going to be the absorbed color. लेकिन here I want to give you a very simple hint. It's a very small hint and it is generalized. It's not specific. Okay, exceptional cases जरूर होते हैं, लेकिन एक generalized से एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको कि ट्रांसमिटेड कलर जो है, जो मेरी आंखों से मुझे दिखाई दे रहा है, उससे एक अंदाजा आएगा आपको. You can get just an approximation, not exactness, please. Okay, an approximation कि what could be the absorbed color. ओके विदाउट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट. ओके और उसके लिए क्या करना है आपको, मैंने 7 कलर्स के बारे में बात की थी आपसे, विबग्योर. ओके सो व्हाट यू डू इज, ये इस तरीके से आप, ये 3 एक्सिस होता है, आप शायद जानते हो अच्छी तरीके से जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो ये 2 पार्ट होता है उसका 3 एक्सिस का, एक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो 3 into 2 becomes 6. आप क्या कीजिए, वो इंडिगो वाला जो कलर है ना, विबग्योर का आई, उसको इग्नोर करो और बाकी सारे कलर्स को उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिख दो. कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप. ओके लेकिन वो सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ आई को छोड़ दो. सो व्हाट वी गेट इज विबग्योर है, तो आई एम गोइंग टू शो इट लाइक दिस. ये देखो ये विबग्योर है. ओके तो ये देखो इस तरीके का आपको कलरेशन का ऑपोजिट कलर्स मिल जाएगा. ओके तो अगर सब जो मुझे कोई कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, ओके इफ आई कैन सी दिस फ्रॉम माय नेकेड आई दैट द कलर इज व्हाट? ब्लू. तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? ओ दैट इज ऑरेंज. यानी एक अंदाजा आ जाएगा आपको, नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यू गेट एन आइडिया क्या, हाँ इट विल बी समवेयर ऑरेंज कलर विल बी एब्सॉर्ब, सो दैट आई एम गोइंग टू सी द ब्लू कलर व्हिच इज गोइंग टू बी द ट्रांसमिटेड कलर. ओके तो ये पेयर ऑफ कलर्स मिलते हैं आपको. ओके आप देखिए दोस्तों, दूसरी बात बताना चाहता हूं, ऑल द कलर्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ दिस. ओके जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है पर्पल. ओके तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कलर्स. ओके यहां पे क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ कलर्स हो जाएगा. तो तब जाकर एक नया कलर आ जाता है. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर येलो और ऑरेंज ओके मेरा एब्जॉर्ब कलर है, तो ट्रांसमिटेड कलर क्या आएगा? वॉयलेट एंड ब्लू. और वॉयलेट और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें क्या कलर मिलेगा? पर्पल कलर मिलेगा.
ओके तो इस तरीके से भी मिलता है. ऐसे बहुत सारे शेड्स होते हैं. Okay, there are so many shades of colors. You know that very well. So that can be formed by mixing of colors, and you get a new shade of color. Okay, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया about purple. यहाँ पे purple आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, देखो. But then if you mix the two colors, okay, violet and blue, it becomes what? Purple. Okay, so this is what I want to make you understand. तो ये जो pair of colors है ना, उसको हम लोग बोलते हैं complementary colors. The pair of colors, कौन से कलर्स है वो? एक तो है एब्जॉर्ब, ओके, और दूसरा जो है वो है ट्रांसमिटेड. ओके, द अदर वन इज व्हाट? ट्रांसमिटेड. और ये जो पेयर ऑफ कलर्स है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. ओके, वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? ऑरेंज होगा. ओके, ग्रीन का कौन होगा? रेड होगा. वायलेट का कौन होगा? येलो होगा. एंड थिंग्स लाइक दैट. आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट एन एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू अ ट्रांजिशन मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स. व्हाई डज इट शो अ कलर? ओके, व्हाट टाइप ऑफ कलर इट इज, एंड द concept of the complementary colors. Okay, so please have a look at it and see whether you understand this very well. All right, now my dear friends, the next point is there's one more factor which is going to affect color. Okay, and that is, yes my dear friends, apart from DD transition what I spoke about, the other factor will be, it depends upon, जब मैं complex की बात करता हूँ तो it depends upon the nature of the ligands, the coordination number, that is the number of donor atoms of the ligands, okay, and the geometry of the complex. Okay, इसके ऊपर भी बहुत से कुछ डिपेंड करेगा जब हम कलर के बारे में बात कर रहे हैं. इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं so that it becomes very clear to you all, and that is, let us take an example of copper complex with water. Okay, so we have CuH2O6 2+. Alright, and this is pale blue in color. Sky blue भी बोल सकते हैं उसको. Okay, we call it as pale blue. ठीक है? Now what I do is, I treat this with a hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज HCl. सो उसमें से Cl माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ डोनर एटम. सो आई ट्रीट दिस विद Cl माइनस and it results in the formation of a displacement type of a reaction, CuCl4 2 minus, and plus I'll be getting water molecule. If you want me to balance the reaction, yes, here we go, 6H2O, this will be 4Cl minus. Okay, so now the water which was a neutral ligand is replaced by Cl minus. It's a displacement reaction. Cl minus is a negative ligand. Okay, so a neutral ligand is displaced by a negative ligand. Next thing is, I would like to see the coordination number is equal to 4. The geometry is going to be tetrahedral. Okay, यहाँ पे the coordination number is going to be 6. The geometry is going to be octahedral. तो अभी उसकी वजह से कलर चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला these are the various reasons which is going to be affected as far as the color is concerned. So यहाँ पे pale blue है, this will become yellow. Okay, so आप देख सकते हो यहाँ पे the metal ion is the same, the charge on the metal is also same. In both the cases the charge on the metal is going to be same. Here it is 2 minus because every chlorine is 1 minus, so total comes out to be 4 minus. So copper will be in the +2 state. Here also copper is in the +2 state, but still it all depends upon the nature of ligands with which it is associated. So यहाँ पे neutral ligand है, there are 6 donor atoms, geometry अलग है. यहाँ पे it's a negative ligand, that is 4 chlorine. Okay, coordination number change, the geometry also changes. Okay, so therefore the color changes. Okay, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया. एक और एग्जाम्पल देता हूँ, and that is we take into consideration CuH2O6 2+, the same one. Okay, it is going to be treated with ammonia molecule, and as a result of which you get CuNH3 4 2+. All right, this is what you get. Now in this case what happens is, water is a neutral ligand, ammonia is also a neutral ligand. Okay, but then the information which I have already provided to you, that I'll just note down once again. Coordination number is 6. The geometry is going to be octahedral. But now if you can just check it out, I'll just balance the reaction also, 6H2O. Now here what happens is the coordination number is 4. So the geometry changes. It's going to be tetrahedral. Okay, and therefore it becomes intense blue.
ओके कलर चेंज हो गया, देखा आपने, इंटेंसिटी चेंज हो गया, दिस वाज पेल ब्लू, स्काई ब्लू एंड दिस बिकम्स व्हाट, डार्क ब्लू। यानी मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि ऑल द फैक्टर्स शुड चेंज एट द सेम टाइम, देन ओनली देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द कलर, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि द नेचर ऑफ द लिगैंड आल्सो शुड चेंज, द कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो हैज टू चेंज, द ज्योमेट्री आल्सो हैज टू चेंज, ऑल these changes then only color changes. No, that's the reason I given you this example. Okay, this is a neutral ligand, this is a neutral ligand. Of course the strength of the ligands are different. Okay, but then once again I want to say that at this particular stage, okay, the strength of the ligand is beyond the scope of the syllabus. All right, so I won't be discussing about all those things. You will be learning all these in the detailed part in the final year of your graduation. But then what I want to say over here is both of them are neutral ligands, but only thing is there is a change in the coordination number, there is a change in the geometry, and hence there is going to be a change in color. All right, so this is, my dear friends, another factor which is responsible for color. पहला मैंने आपको बोला था डी ट्रांजिशन, और दूसरा मैंने बोला था कि ये लिगैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ओके, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन बोला जाता है इसको। पहला वाला केस है जिसमें हम डी ट्रांजिशन की बात करते हैं, जहां पे ओनली मेटल डी ऑर्बिटल्स आर कंसिडर्ड। यहाँ पर वी आर गोइंग टू कंसिडर द मेटल ऑर्बिटल एज वेल एज वी आर गोइंग टू कंसिडर द लिगैंड ऑर्बिटल्स, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। सो ये सेकेंड फैक्टर होता है, एंड आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड्स, okay, you have understood this. Please have a look at it.